कहीं पर भी जाओ भीड़ हो जा रही है, बहुत प्यार मिल रहा है, कोई तकलीफ नहीं अगर कोई बोलता है कि इसको एक्टिंग नहीं आती है. देयर आर मेकर्स आई हैव माई विश लिस्ट. लाइक वो अगर बोलते हैं मुझे काम पैसे इज लाइक ना. Would you ever work with your contemporary Dev? With Dev? Jeet, such a pleasure to have you on Film Companion. Thank you so much. I'm going to start with the dialogue from one of your films. In your blockbuster Boss, you said, "Be the king of your own kingdom," right? And I feel like that's what you've done. You've created your own kingdom in Bengali cinema. You have, an amazing sort of body of work there in terms of success, in terms of like people loving you, audiences loving you. But now you're stepping out of your kingdom, right? Yeah. With your first pan-India film with Chengiz, what is going through your head right now? A lot. Like a lot. what? Sleep is going for a toss now. Like, yeah, the promotions are on at the moment, so the excitement is more than anxiousness or like tension. But yeah, it's more of like excitement, and everything is falling in sync. As in, the tagline of Chengiz says that the one who has no limits and no boundaries, and our thought process also goes in the same way now. We wanted to reach out to wider audience. We wanted our work to be recognized outside. So that's the reason we thought that, okay, let's step out now. And hence Chengiz. This film is, of course, a period gangster drama. And like you said, the character has no limits, no boundaries. He's very charismatic. His life seems very charismatic, but he's also doing terrible things. I mean, you are killing a lot of people in that trailer, right? Yeah. Tell me, Jeet, about balancing that. Because as an actor, this guy is in a sense a hero, but I'm assuming we also have to fear him. Somewhere we also have to think he's capable of anything. Yeah. So as an actor, how did you balance that? And then it was there in the writing, no? Everything was there in the writing. Rajesh Ganguly, Neeraj, Pandey, the way they had weaved the story, the way they had penned it down. So everything was there in the writing, and I had some reference points, as in my upbringing has been in a locality where like we used to see people thrashing, beating, killing. So where was this? It is Kali Ji ka mandir, Kali Ghat, Kalkatte wali Kali, बिल्कुल वहीं पर. काली जी का मंदिर भी काली घाट रोड में है, हमारा घर भी काली घाट रोड में और बिल्कुल नज़दीक है, 2 minutes. So you've seen this up front? Yeah, when we were child. अभी शांत है, अभी सब ठीक है, बट हम लोगों ने देखा है बचपन में. So those were reference point, but more than that, I think it was writing. Tell me about the writing, because it's like you said, co-written by Neeraj Pandey. So I reached out to Neeraj, and he said he's known you more as a friend than an actor. Tell me, ये relationship क्या है with Neeraj, and ये film कैसे निकली उसमें से? Destiny है और क्या? कैसे? हम लोगों ने साथ में काम किया था 2013 में. एक फिल्म बनाई थी द रॉयल बंगाल टाइगर. तो उस दौरान, उसके पहले से मैं नीरज को जानता हूँ. मैं उन दिनों बॉम्बे में ही एक फ़िल्म की शूटिंग कर रहा था, बंगाली फिल्म थी, और हमारे एक कॉलीग थे उन दिनों, उस फिल्म में काम कर रहे थे. आज उनके साथ आज भी अच्छे संबंध हैं. कालीदा उनको कहते हैं हम लोग. तो कालीदा ने कहा था कि ऐसा है, बड़ा अच्छा बंदा है, उनसे मिलो, नीरज से अच्छा काम करता है. तो आई मेट हिम. उस समय उन्होंने वेडनेसडे नहीं बनाई थी. तो उसके बाद से उन्होंने वेडनेसडे में मुझे कुछ एक रोल ऑफ़र किया था, करने के लिए कहा था, बट मुझे एक्साइट नहीं किया, तो मैंने नहीं किया. बट हमारी दोस्ती बनी रही. काम हम लोगों ने सिर्फ रॉयल बंगाल टाइगर ही किया था. बट इत्तेफाक से देखिए, ये अगेन राजेश गांगुली एंड नीरज, दे आर ऑल्सो फ्रेंड्स. तो मैं राजेश को जानता हूँ थ्रू नीरज, राजा को. So now like Raja is also Rajesh, as in we call him Raja. So he's also like a family friend to us, like the way Neeraj is. And yeah, this is how this trio came in together again. And he's like friends with Raja also. Neeraj is friends with me also. And we all wanted to create something. Raja had initially he had written down the entire thing. तो कहानी पूरी जो उन्होंने लिखी थी, बट उसको स्ट्रक्चर करने में नीरज आए, एंड लाइक ही इट स्पेंड टाइम ऑन इट. ही गेव फ्यू डेज विथ राजा एंड दे रोट इट डाउन. सो दिस इज़ हाउ इट इज़. बट देन लाइक हमारे रिलेशन जो है हमेशा बने रहें.
उन्होंने बीच बीच में मुझे काम कुछ ऑफर किया था, मुझे कभी एक्साइट नहीं किया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट वी हैव अ वंडरफुल बॉन्डिंग। और उन्होंने कभी बुरा नहीं माना कि यू नेवर सेड यस टू एनीथिंग ही ऑफर्ड यू? नहीं, बट मेरे ख्याल से वो बहुत समझदार इंसान है, उनको ये समझ आ गया होगा कि हाँ शायद मैं जो चाहता हूँ वो नहीं मिल रहा है। या वो होता ही है, सबके साथ होता है। Of course. या Of course. ये प्रोसेस ही है। Now this film has 76 speaking parts. यस That's incredible. तो आपने तो अपनी डबिंग खुद की है, but for the others, how challenging was that कि सबको they have to be exactly right? We have a team working on it, no? Raja was throughout there in all departments, like everything. अभी भी पोस्ट का जो भी कल तक भी काम चल रहा था, उसमें भी राजा पूरी तरह से इन्वॉल्व था, हमारी टीम भी पूरी तरह से इन्वॉल्व है। चलिए हम तो प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारी फिल्म है, हमें करना ही है, बट अगर डायरेक्टर का भी इन्वॉल्वमेंट उतना ही रह जाता है तो फिर मज़ा आता है ना। या वही है, सारे लोग इन्वॉल्व है, सारे लोग काम कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है। फिल्म बाय गॉड्स ग्रेस हमें लग रहा है कि अच्छी शेप अप की है। वी आर प्राउड ऑफ व्हाट वी हैव मेड। Nice. Also, this year, I read, and tell me if this is true, कि it's the 30th year of your career क्योंकि you started modeling in 1993. नहीं। Modeling 93 में नहीं शुरू? नहीं। तो कब शुरू हुआ था? अब नहीं जाते ना इतने पास्ट में, हम आगे की बात करते हैं ना। आगे की बातें करते हैं। पीछे क्यों देखें? नहीं, पीछे। but I'll tell you why I bring it up. क्योंकि I think it's been an incredible journey. Right? Thank God is kind. Thank you. No, and you've seen such highs, such lows, and you've talked about कि जब वो पहली तेलुगु फिल्म चंदू didn't work, how you had sleepless nights. But at that point, जीत, आपने अपने आप को क्या बोला कि how do I get up and keep going? What did you say? मैं डेस्टिनी को बहुत मानता हूँ और ये अप्स एंड डाउन ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होते हैं बैलेंस स्ट्राइक करने के लिए। तो सेल्फ मोटिवेशन ही इंसान को, आई थिंक लाइक दैट्स द बेस्ट वे। एंड आई हैव टोल्ड इन मेनी प्लेसेस, जब मैं लो फील करता हूँ, आई रीड अ लिटिल बिट ऑफ स्वामी विवेकानंदा, आई रीड अ लिटिल बिट ऑफ चार्ली चैपलिन, और मे बी लाइक सम इंस्पिरेशनल कोट्स फ्रॉम हियर एंड देयर विच आर मोटिवेशनल, so all that, and we are deep down very spiritual. And you mean as a family? Yes, we all in our family are deeply into spirituality. हम उसी बातों पे चलते हैं, जैसे कहते हैं ना कि अगर मन का हो तो अच्छा है, ना हो तो और भी अच्छा है। So वही है। And that's what you told yourself right in the beginning? हाँ, नहीं, उस समय तो ऐसा नहीं था, उस समय लो मतलब लगता इतने था। समझदार तो नहीं आप होंगे ना? नहीं, लो लगता था, इसीलिए अब डेफिनेटली आदमी मैच्योर करता है टाइम के साथ। तो उस समय लो लगता था, काफ़ी दिनों तक तो मैं सो नहीं पाता था। फिर बॉम्बे वापस आ गया, मैं हैदराबाद में था, बॉम्बे वापस आ गया और उसके बाद फिर उसके बाद कुछ दिनों तक ऐसे ही रहा और कुछ घर पे ही अकेला रहता था और जस्ट अपने आप को डिसिप्लिन में लाने की कोशिश कर रहा था, ठीक से सोना और एक्सरसाइज, वर्कआउट, खाना पीना, ये वो। और इतने में कुछ फिर ऑडिशंस के कॉल आ गया, मैं 1-2 जगह पर ऑडिशंस के लिए गया और पहली जगह पर ही जब ऑडिशन के लिए गया तो वो स्ट्राइक कर गया, वो काम मुझे मिल गया, तो वापस मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा वापस आ गया। अब उसके बाद से फिर रोल होना चालू हो गया। But Jeet, you were trying to make it here in Bombay about 20 years ago, right? 22 years more ago. than 20 years, yeah. Right? And now you're back here again. Yeah. But I would say कि this is actually harder because now you're an established star, right? Yeah. How do you deal with the ego? What? With? How do you deal with your ego? क्योंकि Ego. There's nothing called ego. No? Nothing called ego. Ego does not exist. How can you as a superstar say that? Let's see, a bookish definition, if you go by, then bookish definition says that I is an ego. And when you write I in English, you draw a straight line, and straight line stands as a wall between two people, that is ego. I philosophically feel that आप अपने आप को एक ऑब्जेक्ट समझ लो और एक रोशनी है पीछे, सामने दीवार पर एक इमेज दिख रही है, वो रोशनी जो है उसको आप सक्सेस कह लो, अचीवमेंट कह लो, एनीथिंग व्हाट यू वांट, और उसको लाइमलाइट भी कह सकते हैं आप। तो आदमी जब कामयाब होता रहता है तो इसका मतलब है कि उस लाइट के नज़दीक आता रहता है और वो इमेज जो दिखती है वॉल पे वो बड़ी होती जाती है और आदमी सोचता है वो मैं हूँ, वो है ईगो। लाइट हटा दो, आप वही हैं जो आप हैं। That's amazing. Thank you. And
Is that how you deal with all the success? मेरे हिसाब से ईगो ये है, मेरी अपनी सोच और जो मैंने पढ़ा है। तो आप उसको दूर ही रखते हैं? है ही नहीं, ईगो क्या होता है? दीवार को देखते ही नहीं है? जी नहीं, मैं घर जाता हूँ, मेरे बीवी बच्चे, माँ बाप, भाई, उनकी स्त्री, उनके बच्चे, पूरा परिवार जब रहता है तो आपको पता है कि आप वो है ही नहीं। मेरे घर में कोई भी बड़ी बड़ी तस्वीरें नहीं है मेरी। अच्छा। या नो अवार्ड्स, नो पिक्चर्स? अवार्ड्स भी बहुत एक अलग जगह पर रखे हुए हैं सारे अवार्ड्स। ऐसा नहीं है कि मुझे अवार्ड्स पसंद नहीं है, बट रिवॉर्ड्स ज़्यादा पसंद है। और फैमिली मदद करती है आपको बिल्कुल रूटेड रहने में? हमेशा। आपको उड़ने नहीं देती? हमेशा ही ग्राउंड उड़ने के प्रोत्साहन देती है, उड़ो, आगे बढ़ो। हाँ। लेकिन घमंड नहीं आता? नहीं, लाइक या, है ना? There's a difference. I don't know what is it like, but yeah, my parents and everybody, all family members are very simple. Yeah. And you've kept that simplicity. That comes in DNA, no? Yeah. That's genetics. But you do come to Bombay to have your hair cut. ये मैंने पढ़ा है. Now I have a stylist, like he's working with me, but कभी-कभी उसके बावजूद भी लगता है हाँ किसी कैरेक्टर के लिए कुछ अलग ट्राई करें and all that, just to try a different hand. Then yeah, I do come sometimes. So my colleague Orithro Banerjee, who is based in Calcutta and of course is the expert on Bengali films for us, he said that in Bengali cinema there has been a tradition of remakes from about the early 2000s to now to like 2017, 2018. Is it possible that because itne remakes ban rahe the, writing talent wasn't nurtured? Do you think that's true? True. We don't have too many writers. We have writers, but again in a mainstream space. एक ट्री चलता है। आज सुबह मैं अनिल जी के साथ बैठा हुआ था, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि बंगाली सिनेमा का जो परसेप्शन है, ग्लोबली कहिए चाहे नेशनली कहिए, वो परसेप्शन जो है वो अलग स्पेस पर है। दैट्स लाइक मोर ऑफ सत्यजीत राय का घराना, ऋतिक घटक का घराना, मृणाल सेन का घराना, तपन सिन्हा का घराना, वो सारी चीज़ें जो हैं उसकी एक छवि बनी हुई है। उसके बाद जो है उसी को फॉलो करके काम ज़्यादा हो रहा है। लेकिन वो जो लाइक साउथ बॉलीवुड जिस तरीके से हो रहा है नॉर्थ में या साउथ में, या मोर मेन स्ट्रीम जिसको हम लोग कहते हैं, वो काम या कम हो रहा है अभी। और उसकी पहले बीच में हम लोगों ने रीमेक जब किए थे तो लगभग वही सारे होते थे। आजकल नहीं होता है, कम लोग करते हैं, लगभग नहीं के बराबर है। ये फिल्म हम लोगों ने बनाई है तो अनिल जी ने पहला रिएक्शन उनका यही था कि अच्छा बंगाल में ऐसी फिल्में बनती हैं। You know how Anil ji talks, no? No, Anil Thadani, right? One of course, who's distributing? Yes, yeah. So, Jeet, what keeps you going to this more mainstream rather than जो traditional, like you said, perception है Bengali cinema का? I like this genre. I love this genre. As an actor, you enjoy it more. Yeah, because audience also enjoys more. More number of people enjoys this. Yeah. Let's put it this way. Yeah. But as an actor, does it satisfy you? A lot. So it's not कि you're compromising on your acting instincts? Not at all. मुझे बुरा नहीं लगेगा लोग कहेंगे कि ये उतना अच्छा एक्टिंग नहीं जानता, लेकिन ये कहेंगे कि हाँ कहीं पर भी जाओ फिल्में चल रही हैं, लोग तादाद में आकर देख रहे हैं, कहीं पर भी जाओ भीड़ हो जा रही है, बहुत प्यार मिल रहा है, कोई तकलीफ नहीं अगर कोई बोलता है कि इसको एक्टिंग नहीं आती है। Which brings me to a line that you said कि I am not after perfection. Instead, I'm chasing precision. Yeah. What does that mean? Perfection is a myth. क्या होता है perfection? मुझे नहीं पता। मुझे लगता है कि हम कोशिश कर सकते हैं कि, और कई लोग बेस्ट पे बिलीव करते हैं, मैं बेटर पे बिलीव करता हूँ। मुझे लगता है कि बेहतर बनो, सीखो हर दिन कुछ ना कुछ। बेस्ट जब होगा तब होगा। बेस्ट पता नहीं होता है कि नहीं। Yeah. So you might as well go improve yourself every day. Yeah, if we can do that, nothing like it, no? Yeah. I agree. I think so. अच्छा, ये जो आपने कहा कि स्वामी विवेकानंदा और चार्ली चैपलिन, ये रेंज बहुत है. What do you get from these two?
philosophical things from Vivekananda a lot, a philosophical thing in Charlie Chaplin also, but from a entertainer's point of view. So Charlie Chaplin comes with like more where as an artist I connect. In that mix of tragedy and comedy that he's such a genius at. Yeah. And with Swami Vivekananda, what do you get from it? It's a way to live? Lot of spiritual connect is there, more of that. Philosophical is also there, there's a lot of spiritual connect. So these are the ways, Jeet, in which you continue to obviously be a very busy and very popular star, but you keep grounded. Yeah, that's most of the people today's generations are. I think most of them, I think so. And मैंने हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि ऊंचाई पे अगर चढ़ना है तो झुक के ही चढ़ा जाता है. Is this what you write in your diary? क्योंकि मैंने ये भी पढ़ा कि you have a diary और आप लिखते रहते हैं. हाँ, फोन पे नोट्स पे कभी-कभी लिखता हूँ. क्या लिखते हो आप? जब जो थॉट्स आते हैं, आजकल नहीं लिखना हो पा रहा है, बट कभी-कभी लिखता हूँ और हैं कुछ नोट्स मेरे लिखे हुए हैं. तो ये कभी शेयर होंगे? बिल्कुल होने with चाहिए, the world? बिल्कुल होने चाहिए. हाँ. हाँ. You'll publish a book maybe? Will you write it for me? No, writing has to be you. I can help you to write. But you're writing poetry or you're just writing sort of philosophical ideas? No, any random thoughts, not poetries and all, not much of poetries. मुझे शेर बोलना अच्छा लगता है कभी-कभी, इधर-उधर से सुनते हैं कि उसमें हर शेर में कुछ ना कुछ फिलॉसफी होती है, कोई ना कोई बात होती है. हाँ. Do you see yourself, Jeet, you're already an actor, you're a producer, do you ever see yourself directing? I don't know, as of now there's no plan. As of now, no. But is it something that excites you as an idea? As of now, I'm enjoying what I'm doing. Yeah. Absolutely. What is your ambition, Jeet, for Bengali cinema? Let's say for the next 5 years. What do you want to see happen there? I can speak in volume about this after the release of Chengiz. If Chengiz can make a space, I'll be in a better situation. Maybe we'll sit again and we'll talk on this. You know, one of the things that's happening, and that didn't happen for a long time, is the two-hero film or the multi-starrer. You know, बहुत वक्त के लिए ये हुआ ही नहीं because it was impossible. It was just impossible to get the actors together, dates together, payments, just budgets, all of that. But now if you see, you know, a film like RRR or in Hindi Vikram Veda or even it was a cameo, lekin it was an extended cameo for Salman in Pathan. Would you ever work with your contemporary Dev? With Dev? Yeah. We have worked in the You past. have worked in the past, but now at this point, would you do? Why not? Have you, like, do people even think of putting you guys together again? The film I was talking about, the Royal Bengal Tiger, I had a half an hour cameo in the film, and the film was on Abir. So that's okay. You're not fussy about कि मुझे इतनी footage चाहिए. नहीं. What attracts you to a project? If I have been looking forward to a project which have like a female lead in the protagonist and the story revolves around her, and if I have something like Damini, for example, I would love to do that. तो लोग लेकिन ऑफर ही नहीं करते ऐसी पिक्चर आपको? आई नहीं है कभी ऐसी. मैंने सोचा था, आजकल ऑफर करने वाली बात बंगाल में हमारे यहाँ कम है. हम ही लोग खुद You're making it yourself? Yeah, we are doing it on our own. But otherwise, yeah, हम मुझे भी कहीं समझ कभी मिला नहीं ऐसा कुछ राइटिंग में, और किसी ने सुनाया भी नहीं. तो are you, because you are in a position of power, do you want to enable new directors, new voices? Is that an ambition? One of the ambitions, yes, that's there. We have been doing that, and that's like such an enjoyable process. People with like with so much of fire, so much of want to do something, that sort of a thing. Yeah. And I know, like when I started, how was it? पैसे नहीं दो कोई बात नहीं. अभी भी ऐसा होता है. अभी भी there are makers. I have my wish list. Like वो अगर बोलते हैं मुझे काम, पैसे is like ना. कौन है wish list? हैं बहुत सारे हैं. बहुत कोई सारे तो आप बताइए. I have been an admirer of Rajamouli sir, Rajkumar Hirani. I like a lot of people's work now, like Sukumar, Prashant Neel, Sanjay Leela Bansali ji, and so many people are there. Wonderful makers around. But yeah, I have been admirer of first two names which I took. Yeah.
So tell me, Jeet, as a producer, if I'm a director or a writer and I want to get my project to you, how does one find you? Is there a website? Is there an email? How do I put my pitch across? Oh, you have my PR's number. Not for me personally. I'm asking this for all the aspiring directors and filmmakers. जिसको पहुंचना होता है, ढूंढना होता है, वो ठीक पहुंच जाता है, ठीक ढूंढ लेता है. बहुत मुश्किल है. अगर कोई जगह है जहां they can reach you, please tell us on this platform. मैंने हमारी मुलाकात में आपको कहीं कोई दिक्कत आई? नहीं. हाँ, तो फिर मैं टाइम से भी आ गया था, आप भी टाइम से आ गए थे, आप तो मुझसे पहले आ गई थी. तो we should take that to mean कि they can reach you easily. Yes, if they come with something like productive, constructive, yes, of course. And you would be willing to give time to listen and all of that. Of course, yeah, we listen because we produce outside also. No, like even if I am not acting in the film, there are projects we have done in the past, couple of projects where there was a different cast, and yeah, we hear the story. As it is, like we are open for any kind of content. I am there, I am not there. That doesn't make a difference. How wonderful. Yeah, we have been doing that with that thought process, because we have a house not to only cater me. The house is to cater the industry. And tell me finally that what do you want people to take from Chengiz? Entertainment. It's a grippy film, edge of the seat thriller. Yeah, entertainment is like a sure shot for sure. That's what we feel. The pace of the film, everything. मतलब लोग just have to be engrossed by the story. Yeah, a lot of surprises, a lot of thrill moments are there. What next will keep you glued? We hope so. And is there anything next for you? Yeah, you'll only decide that once this is done. No, we have already announced a couple of films. One, we have more or less like 80-90% of the film we have already shot also. The film's name is Manush. And after that, there is another announcement. But at the moment, everything is around Chengiz. Well, good luck for Chengiz, and Thank I you can't so wait much. to see it. Thank you so much. It was so lovely to see you, lovely talking to you. Thank you. Thank you. Hi, নমস্কার, আমি জিৎ। অনুপমা জির সাথে বসে কিছুক্ষণ গল্প হলো। উনি খুব সুন্দর সুন্দর প্রশ্ন করলেন। আমি তাকিয়েছিলাম ওনার সাথে ইন্টারভিউ করার জন্য। Thank you, Anupama ji, and to follow her, please subscribe her YouTube channel, Film Companion.